Okay, good morning, friends. Anyone is having any issue related to the ISC1? Any question? If you are not understood, please let me know. कुणाला जर प्रॉब्लेम असेल ISC मधला कुठला क्वेश्चन पेपर जर समजायला प्रॉब्लेम झाला असेल तर तो मला सांगता का तुम्ही? Hello, Ashish. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कालच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये काय डाऊट वगैरे काय होते? नाही सर. काय नाही ना? ओके, म्हणजे सगळे प्रॉब्लेम सुटायचे होते ना? हो सर, एक तर ते तुम्ही घेतलेला तो चालता. हा, तोच टाकला होता. त्यामुळे ते तर 6 मार्क मिळायलाच पाहिजे होते. चालतंय. प्रशांत नाविन, प्रशांत. सर ते एमआय चं युनिट काय येत होतं? मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं युनिट. MMCM ऑल मीटर सगळेच असू शकतात ना. युनिट आहे ना, लेंथचं युनिट काय असतं या? हा ठीक मीटर आहे बी सर, असतं, कळालं. सेंटीमीटर बी असतं या, MM बी असतं या. हा मग ते रेस टू 4 येतं ना इथं. ते सर कसं सगळे ते पहिल्या ऑप्शन मध्ये पण MM रेस टू 4 दोन्ही कॅपिटल होतं ना, ते मग कन्फ्युज झालं नेमकं काय आहे नेमकं ते. हा तसं म्हणतोय का? नाही, दिस इज MM रेस टू 4 होतं. हा ठीक आहे सर. Okay, we will solve today one problem. Open page number 83 in assignment booklet. Assignment booklet मधलं 83 पेज नंबर ओपन करा. Okay, have you opened the page number 83? So we'll solve this problem today. The problem is a fine light string ABCDE whose end A is fixed has a weight of P1 and P2 attached to it at B and C. It passes around a smooth peg at D. Actually, it is a pulley, not a peg. Smooth pulley at D, carrying weight of 400 Newton at a free end E, as shown in a figure. In this position of equilibrium, BC is a completely horizontal. AB and CD makes an angle 150 degree and 120 degree with BC. Find out the tension in the portion of AB, BC and CD of the string. And also find out the magnitude of P1 and P2. Also find out the magnitude of P1 and P2. So this is the question. Everyone is having question in front of you.
Now this is the question. What they have asked to find out, please check it. They have asked to find out tension in the string AB, BC, and CD. Also find out P1 and P2. Now such types of problems are actually exist. कि एक स्ट्रिंग है, एक डोरी है, एक कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल, ऐसा इसको इधर एक कंप्लीटली अटैच किया है एट वन एंड, उसको थोड़ा वेट डाला है इधर, बाद में इधर एक वेट डाला है, एंड एट द एंड ऑफ द पुली दे हैव अप्लाइड द 400 न्यूटन फोर्स. नाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, one thing you must require to know that tension is only exist in, or I can put in another way, in a string only tension exists, compression does not exist. आप कोई भी एक डोरी ले लीजिएगा, उसको कंप्रेस करने की कोशिश कर लीजिएगा, they are not going to compress, they are not going to compress, they are always under a tension. If you see that, if you have taken one string, कुछ भी ऐसे एक डोरी ले लीजिएगा और इसको आप कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए. कंप्रेस मतलब अप्लाइड द फोर्स टुवर्ड्स द बोथ फोर्सेस मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, उसकी तरफ आनी चाहिए. इफ आई अप्लाई द फोर्स ऑन दिस स्ट्रिंग, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस. बट इफ यू अप्लाई द फोर्स ऑन द स्ट्रिंग, टेंसाइल फोर्स, दिस इज कॉल्ड द टेंसाइल फोर्स, दिस इज कॉल्ड द कंप्रेसिव फोर्स. टेंसाइल मीन्स मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर is called as a tensile, and moving towards the center is a compression. So if I apply the tension on the string moving away, I am applying the force in this direction away, so moving away from the center is called as a tensile force, and moving towards the center is called as a compressive force. Now in a string, compression does not exist, only tension exists. So this is the one statement. So you remember this statement. Statement is very, very important, because to solve such types of problem, this statement is going to help you. And second thing, if the string is a completely uniform, if the string is a completely uniform, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये string जो इधर है और इधर से इधर connected नहीं है, from this point to this point they are completely connected to each other. Are you understanding? So in this string, uniform tension is there. Means suppose that इधर 400 न्यूटन टेंशन रहेगा तो इधर भी 400 टेंशन रहेगा. टेंशन इधर जितना है 400 होगा तो इधर भी 400 ही रहेगा. स्ट्रिंग में या डोरी में यूनिफॉर्म ही टेंशन रहता है. ऐसा कभी नहीं होता कि पहले जो स्ट्रिंग है इधर 100 न्यूटन है, इधर 50 न्यूटन है, इधर 20 न्यूटन है, इधर 10 न्यूटन है, बाद में 0 है. ऐसा कभी स्ट्रिंग में होता नहीं है. तो यूनिफॉर्म टेंशन इज एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की एक खासियत है, वही तो खासियत है कि वो यूनिफॉर्म, जितना भी टेंशन है सभी पॉइंट पे सेम ही रहेगा. क्लियर? तो जितना आप बोलेंगे कि नहीं ये कंप्लीट यूनिफॉर्म होगा तो इसमें सब में सेम रहेगा, वैसा नहीं है. ये स्ट्रिंग इधर स्टार्ट हो गई, इधर एंड हो गई, दूसरा फोर्स अप्लाई किया ना, इधर एक डोरी से दूसरी डोरी इधर कनेक्ट की गई, बाद में इधर से इधर तक सेम ही टेंशन रहेगा और इधर से इधर तक सेम ही टेंशन रहेगा. क्लियर? सो दिस 2 points you are required to remember. The tension force is moving always away from the center. Now if I wanted to draw the FBD of this, the tension should require to move away from this center. If I consider tensile force required to move away from the center, if I wanted to consider this string, tensile force is moving away from the center. Now if I consider the B point, tensile force is moving away from the center and tensile force is moving away from the center. So I will give the name. It is TAB. This is a TBC. Both the tension remain same. Already I have mentioned that in one string only one tension exists, and this is a TCD. Am I right? And if I consider this is a uniform, because this is a frictionless pulley, so this tension moving away from the center. टेंसाइल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर. जिधर भी कनेक्ट हुआ है उधर से वो अवे मूव होता है. सो इट इज
TCD, I can put here same way here. So TED, it is a E point, no? Now I know that TCD is equal to TED. TCD is equal to TED. TCD is equal to TED because it is a one string. In one string, only one tension exists. Now, how much TED that we have required to find out. For that, we have required to draw the FBD of this 400 Newton. 400 Newton की FBD draw करना पड़ेगी. So TED in upward direction and weight is in downward direction. So this is the FBD of 400 Newton body. This is the FBD of, already I have mentioned that when we are drawing a FBD, only one body we have required to consider at one. At one, we have required to consider only one body. Clear? So we have required to consider only one body. So that is 400 Newton we have considered. So if I do a summation of f of y is equal to 0, W is equal to our TED minus W is a 400. 400 is equal to 0. So TED is equal to how much? 400. Clear? Now, if TED is a 400, I know that it is a TCD is also 400. Clear? Again, I am repeating. The force is in a downward direction. If I draw the FBD of this body, tensile force is always moving away from the center, and in the string only tensile force exists. So that this arrow I have required to move away from the center. ये center हो गया. Clear? So on this body only two forces exist. One is the W, which is a 400 Newton, and another one is the TED. Only two forces exist there. Now, if I do a summation of f of y is equal to 0, there is no horizontal forces there. So that I not did summation of f of x is equal to 0. So if I do the summation of f of y is equal to 0, TED upward minus 400 is equal to 0. So TED is a 400. Now, I know that one continuous string exists only one tension. ऐसा कभी नहीं होता कि टेंशन एक स्ट्रिंग है उसके एक कोने में 200 न्यूटन फोर्स और एक एंड में 0 न्यूटन फोर्स है, ऐसा नहीं होगा. द स्ट्रिंग इज हैविंग दैट टेंडेंसी, जितना भी फोर्स है वो यूनिफॉर्म रहेगा. सो दिस इज अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. इनएक्सटेंसिबल जो लंबी नहीं होती, जो रिजिड रहती है ना, हाँ, वो स्ट्रिंग हम कंसिडर कर रहे हैं. एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हम नहीं कंसिडर कर रहे. जो रबर टाइप स्ट्रिंग रहती है वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं. हम कौन सी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हैं कि जो इनएक्सटेंसिबल है, जिसका एक्सटेंशन नहीं होता है. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इफ यू सी दैट इट इज कनेक्टेड एंड दिस इज अ कंटिन्यूअस वन स्ट्रिंग, सो दैट आई कैन गारंटेडली से दैट TED is equal to TCD, and TCD is equal to TED means TCD I know that it is a 400 Newton. Clear? Now, one thing you can do now, you draw the FBD of a point C now. Try to draw the FBD of point C. Try to draw the FBD of a point C. Now I will draw the FBD of a point C, which is very simple. Then P2 is the downward direction, TBC and TCD. This is the FBD of a point C. Now this included angle, you know that. How much it is?
120 degree. This included angle, you know that it is a 120 degree. P2, so if it is 120, I know that it is a 60. Am I right? So this is a 60, 90. So can you apply Lami's theorem in this case? Can we apply? Yes. Yes, sir. Three concurrent forces are there. All the forces are moving away from the center. So we can apply a Lami's theorem here. And TCD value, I know that it is a 400. TCD is a 400. So I will consider here TCD divided by sin 90, angle between these other two forces. So sin 90 TCD divided by sine angle between two other forces, sin 90, is equal to TBC. I will put here TBC upon sine 60 plus 90, 150. So can you find out TBC, because this TCD is a 400? Can you find out TBC? Now find out this now. TBC 200. 200. 200, sir. Now find out the value of P2 here now. Now TCD is a 400. TCD is a 400 upon sin 90 is equal to P2 divided by sin 120. How much is 346.41. 346? I will consider 346 Newton. Clear? Now anyone is having any question related to this? Okay. If not, we'll take next few. Next FBD will consider P1, or I will erase this portion now. Instead of drawing here, we don't have so much space. I will erase this portion now. I have drawn the FBD TAB. TBC value already I know that it is a 200 Newton. Now can we apply Lami's theorem in this case also? Can we apply Lami's theorem here? Yes, sir. Yes. So apply Lami's theorem in this case. So this is the FBD of second. ना? You have required to draw a separate. आपको दूसरी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. So I will consider first TBC divided by sin. Sin कितना रहेगा ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है. So 90 plus 30, 120. Sin 120. This is a 120, no? 150 matlab this is a 30 and this is a 90. So it is a 120 and TBC value already you know that it is a 200 Newton is equal to P1 divided by sin 150.
P1 divided by sine 150. So find out the value of P1. Find out the value of P1. What is the value? 115.47. 150. 15. 15 no? हाँ 115. Okay. So 115 Newton. Similarly, you are required to find out the same value of TAB. So 200 divided by sine 120 is equal to TAB divided by sine 90. So what is the value of TAB? You can check it now. Two thirty. 230. 230. 230. Okay, so 230 Newton. Okay, so in this way, all tensile forces in the string, as well as P1 and P2, we have found out. And for that, we have just used the Lami's theorem. We don't require to use the equilibrium equation also. That is summation of f of x is equal to 0 and summation of f of y is equal to 0. ये भी मेरे को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी है. Clear? Now in this way, the initial part of this chapter we have completed. If anyone is having any doubt related to this, you can ask me. Otherwise, we will start a small second portion of this chapter, which is called as a beam. Problems or numericals on a beam. So I will explain what is meant by beam, and we will try to solve the problems related to the beam now. सर ए पॉइंट से आप टेंसाइल की ये सर फोर्स है ना सर वो समझाए थोड़ा सा पॉइंट ए सर ये पॉइंट तो इधर है ना, फिक्स्ड है ना वो. ये पॉइंट इधर हाँ फिक्स्ड सर है. तो बी इधर से का सर खाली एक, हाँ इधर ही खाली एक ही टेंसाइल फोर्स रहेगा ना, वो और वो सेम ही रहेगा. टी ए बी, ये और ये. सर वो फिर ये एफबीडी में सर कोई एफबीडी में नहीं आएगा सर वो. नहीं, उन्होंने क्या पूछा है, टीएबी फाइंड आउट करने के लिए कहा है. हमने टीएबी अभी फाइंड आउट कर लिया ना, तो ये क्यों ड्रॉ करने का. आपका क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया कि आपका कहना है कि ये का भी एफबीडी ड्रॉ करना है, लेकिन व्हाई टू ड्रॉ. हम एफबीडी क्यों ड्रॉ करते हैं कि हमको कुछ आंसर फाइंड आउट. पॉइंट बी पर सर. हाँ पॉइंट बी पर. ओके, पॉइंट बी इज हियर. ये समझ में नहीं आया क्या. हाँ सर. ओके, इट इज वेरी सिंपल. हियर कोई भी स्ट्रिंग होगी, ये बी पॉइंट है, ये फोर्स तो ऑलरेडी P1 है. तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंसाइल फोर्स हमेशा ही रहता है ना, एंड टेंसाइल फोर्स इज ऑलवेज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर. यस सर. ये सेंटर कंसीडर कर लिया तो ये अवे. नाउ इफ आई कंसीडर दिस सेंटर, दिस इज अवे. समझ में आ गया. तो ये फाइव कंसीडर दिस 3 पॉइंट. सो ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट रहता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्ट्रिंग में जो फोर्स रहता है वो सेम ही रहता है. जब मैं ये एफबीडी सी पॉइंट की एफबीडी निकालूंगा तो ये टेंशन लेना पड़ेगा, डायरेक्शन ये लेना पड़ेगा. लेकिन जब मैं बी पॉइंट का ले लूंगा तो मेरे को अवे फ्रॉम द सेंटर लेना पड़ेगा. या ओके सर आ गया. So this is a TAB and this is a TB. So remember, it is a very simple thing. कोई भी टेंसाइल फोर्स लेना हो, उस एफबीडी पे जाओ, उस एफबीडी में सेंटर से अवे ले लो, दैट इज अ टेंसाइल फोर्स. Okay. In this way, we have completed this numerical. Now we'll take a next type of problems, which is we can call as a beam or problems related on a beam. First, we have required to understand what is meant by beam or column. Okay, so write down the heading beam.
Write it down the heading beam. Now, many times you have heard this name. बीम ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है कि कोई भी बिल्डिंग होगी तो बिल्डिंग होगा या डैम होगा तो हम बोलते हैं कि वो बीम पे बहुत लोड है. तो सिंपल थिंग, जिसकी लेंथ, जिसकी जो स्ट्रक्चर रहता है, जिस स्ट्रक्चर की लेंथ इज greater than width और थिकनेस, जिस स्ट्रक्चर की लेंथ इज greater than the another two dimensions, such type of a structure is called as a beam or a column. If it is in vertical, it is a column. If it is horizontal, we can call it as a beam. Clear? So if I consider this structure is having length higher as compared to the width. इधर जब मैं इसका width ड्रॉ करूंगा तो width इसका बहुत कम है. Suppose that length is 100 mm and width is 1 mm. So this proportionate is more. 100 mm and 1 mm का जो difference है बहुत है, इसलिए such type of structure is called as a beam. Now, why we are required to use the beam? Because whatever the loads which are going to come here, इधर जितने भी loads रहेंगे, through a column, they are going to transfer or they are going to distribute these forces. This beam is going to distribute these forces and transfer to the column. Distribute means वो खुद distribution नहीं करता है, जितना भी इधर लोड आएगा वो लोड कॉलम को ट्रांसफर करने की जवाबदारी बीम के रहती है. तो बीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू सी द कॉलम टाइप ऑफ एन थिंग. वी नो दैट कॉलम्स आर सपोर्टिंग मेंबर्स. कॉलम्स आर सपोर्टिंग मेंबर्स. ओके, सो ड्यू टू दिस कॉलम सम रिएक्शंस आर गोइंग टू प्रोड्यूस हियर. Due to this column, some reactions are going to produce. Means if I wanted to draw the FBD of this diagram, I will draw in this way. Three forces are acting in above direction, and due to this column, this is a support. Column is a support. So due to this column, the reaction force are going to generate. This is, I can say it is A, and this is a reaction at point B. Are you understanding? Means in our case, these are the columns are called as a support. We will not call it as a column, it is a support. And due to support, we know that there is a reactions are going to produce. Due to support, their reactions are going to produce. Clear? So we will see types of a beam. We will see the types of a beam. So first type of a beam, we will consider a simply supported beam. Simply, so write it down. Simply supported beam. This is very important. Supported beam. Simply supported beam. So in this type of a beam, you can check it. Suppose that this is a beam. This is simply supported beam or roller support also you can call. Simply supported or roller support beam. Simply, or I will write here, roller support beam. Supported beam. Now what is the meaning of this? Now meaning is very simple. Simply supported beam is nothing but this beam we can lift in upward direction. It can be moved in this direction, but it can't be moved in a downward direction. This type of a beam can be lifted in upward direction. It can be moved horizontally, but it can't be moved in a downward direction. And this simply supported beam
are represented by this symbol. This simply our roller support beam is represented according to engineering mechanics. They are represented by in this way. Below there is a rollers are there. And if I wanted to draw the FBD of this, only one reactions are there. Only one reaction. Roller support is going to produce only one reaction, that is a vertical. Clear? Because they are not allowing B to move below. They are not allowing to move below. It can be rotated. So it is not going to oppose the force. What is the reaction? The reaction is nothing but those are opposing to the motion. नीचे आने के मोशन को ये अपोज कर रहा है, इसलिए दिस इज कॉल्ड एन रिएक्शन. आप सपोर्ट भी देख लीजिए. हम जब भी देयर इज एन सपोर्ट, सपोज देयर इज अ रोलर सपोर्ट, रोलर था, रोलर के हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए, तो उसमें हमने क्या किया, वेट एंड द रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सपोर्ट. So here also same thing. Reaction produced at two location, their support is there, so that there are two reactions. There are at two location, this location and this location there is a support, means there are two reactions. Clear? So draw it. Draw it so that I will take next. Okay, now next one is a fixed supported beam. Fixed supported beam. A fixed supported beam is represented by this is a fixed supported beam. At one end, the support is a fixed. At one end, the support is a fixed one. At two end also I can represent this. I don't have any issue related to this. On other end also I can prepare, but I will not do. At one end, the beam is supported fixed. Now you know that this end can be moved upward or downward. It can be twisted. Okay. But this end cannot be moved in upward direction. It can't be moved in a downward direction. And also, due to this support, it is also not going to rotate. Due to this fixed support, this beam, or I can say point A, is not going to move downward. It is not possible to move in upward direction. And it is also not possible to rotate. So, see here, this beam is not going to move in a downward direction due to this reaction. Am I right? Now, second thing, it is not going to move in horizontally direction also. It is not going to move in horizontal direction, so that this arrow should be in this way. Reaction, the direction may going to change. See here. If I apply the downward force, here if I apply the, from this side, if I apply the downward force, reaction will be upward. If I apply the force in upward direction, reaction will be from upward direction. If I apply the force in this direction, मैंने इसको ऐसा प्रेस किया, तो reaction force will be in this way. If I apply push, मैंने इधर को इसको pull करने की कोशिश की, तो reaction should be in opposite. So these arrows are not going to matter here. Clear? So this arrow does not allow to move this beam in a horizontal direction, and this arrow or this reaction I will put here, this is RV, V stand for vertical, and this is RH, H stand for horizontal. So vertical reaction and horizontal reaction. Now this fixed support does not allow to this beam also to move or rotate. उसको rotate भी नहीं करने दे रहा है. So here movement is also going to produce. So there are three reactions, RV, RH and movement.
Now again I will repeat this how it is. If I apply the force in a downward direction, ये रोटेट होना चाहिए था. इधर मैंने फोर्स अप्लाई किया तो मूवमेंट प्रोड्यूस हो गया ना इधर. सपोज दैट इफ आई अप्लाई द फोर्स हियर, ये एक्चुअली रोटेट होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? रोटेट नहीं हुआ. किसने उसको रिपल्शन किया? मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फिक्स्ड सपोर्ट. मूवमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दिस फिक्स्ड सपोर्ट means I can say that in fixed support there are three reactions. One is RV, then RH, and third one is the MA. Clear? So draw this diagram. In a fixed support there are three reactions: RV, RH, and opposite anti-clockwise movement. If the force is in downward direction, opposite. If the force is in upward direction, movement is opposite. Okay, so this is a fixed supported beam. So if it is completed, we will take a third. सर एक फिर से बोलिए सर. कौन सा? यही सर पूरा. Fixed support. Okay. Now हाँ, again sir. I am repeating this. Here. आपका ये जो बीम है, आप किधर भी इसको फोर्स अप्लाई कर लीजिएगा, इसका हॉरिजॉन्टल भी मोशन नहीं हो रहा है. इस पॉइंट का हो रहा है. इधर फोर्स अप्लाई करने के बाद इधर हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट का हो रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल मोशन और सॉरी वर्टिकल मोशन नहीं हो रहा है. वही तो इसको रिपल्शन कर रहा है ना, उसको रिएक्शन. ये रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज देयर, सो दैट इज अ रिएक्शन. सपोज दैट एट पॉइंट ये इफ आई अप्लाई द फोर्स वर्टिकली, ऐसा मैंने फोर्स अप्लाई किया तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है. तो कोई तो उसको रिपल्शन कर रहा है, दैट इज अ रिएक्शन फोर्स हियर. सिमिलरली सपोज दैट इफ आई हैव पुल्ड दिस और आई हैव पुश्ड दिस, ये बार को मैंने पुश किया, इसको ऐसा कंप्रेस करने का कोशिश किया, तो ये पॉइंट उसकी जगह से हिल गया क्या? ये point has not moved from his position. Still it is by application of horizontal force also, this A point is remain in the state, so that someone is there who is repulsing this. उसको मैं repulsion, कोई तो है इसको repulsion कर रहा है. So this is a second reaction. Now you can see third case. I have applied the force. इधर मैंने force apply किया और मैंने इधर क्या किया कि सपोज दैट सिंपल, ये सिंपली सपोर्टेड बीम रहता, सिंपली जस्ट मैंने इसको सिंपल किया होता. इधर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये रोटेट होने की कोशिश किया होता ना. ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये रोटेट होने का चांसेस है क्या? नहीं है. ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट. तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये जो ये केस में रोटेट होगा, लेकिन इस केस में रोटेट नहीं हो रहा है क्योंकि इट इज अ फिक्स्ड वन है. इतना इधर कितना भी फोर्स अप्लाई कर लीजिएगा, ये रोटेट नहीं होने दे रहा है. तो कौन रोटेट नहीं दे रहा है? दैट फिक्स्ड सपोर्ट मींस अपोजिट मोशन. रोटेशनल को, क्योंकि मेरे को पता है फोर्स इज गोइंग टू प्रोड्यूस ट्रांसलेटरी मोशन एंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज गोइंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट. नाउ दिस फोर्सेस आर गोइंग टू प्रोड्यूस मूवमेंट हियर. ड्यू टू दिस इट इज गोइंग टू रोटेट. दे विल ट्राई टू रोटेट, but this force is opposing to them, and that is the movement. So in a simple way, fixed support is having three reactions. First reaction is a vertical, second one is the horizontal, and third one is the movement. Clear? Yes sir. Okay. Okay. So see here, if you understood what is mean by reaction, you can easily understand. Reactions are opposite to the applied force. Reactions are always opposite to the, and they are invisible. Visible नहीं होता है, इसलिए तो हम क्या कर रहे हैं कि ये फिक्स्ड सपोर्ट की एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं ना. इधर फिक्स्ड होगा तो कौन कौन से लेने चाहिए? तो आरवी, आरएच एंड एमए लेना चाहिए. सिंपली होगे तो क्या करना चाहिए? मेरे को खाली आर लेना चाहिए. रिएक्शन फोर्स वी हैव रिक्वायर्ड टू टेक. आपको मोशन को अपोजिट करता है उसको हम रिएक्शन बोलते हैं. कोई भी रिएक्शन किसको बोलते हैं?
कि by if I apply the force, there is an equal and opposite amount of force is there, that is a reaction. So here in a simply supported beam, if I apply the force here, it is going to rotate, but here it is not going to rotate because someone is opposing. So that is movement we are required to consider. Okay, now second part also we have completed fixed support. Now third one is the hinged support. Now in hinged support you will understand this now. Hinged means door. Door opening, you have seen that if I apply the force at one corner, the door is going to open. Am I right? So hinged support is represented by this symbol. Hinged support. There is a no roller is there. In hinged support, there are no roller. Previously in simply support, rollers are there. अब hinged support का क्या होता है देख लीजिए. Hinged support, they are not allowing this beam to move horizontal direction, and also they are not allowing to move in vertical direction. Horizontal and vertical direction को movement करने नहीं दे रहे हैं. और I will erase this portion I will erase so that you will get idea. इसको वर्टिकली मूव नहीं होने दे रहा है, हॉरिजॉन्टली इसको मूवमेंट होने नहीं दे रहा है, लेकिन मैं इधर फोर्स अप्लाई करने के बाद ये रोटेशन के लिए वो फोर्स नहीं, अपोजिट फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा है, इसको फोर्स अप्लाई करने के बाद ये रोटेट हो रहा है. सो डोर हिंजेस आर देयर, टू द डोर हिंजेस आर देयर. नाउ डोर कभी ऐसा नहीं होता कि डोर के हॉरिजॉन्टल मोशन हो गई है, उसकी वर्टिकल मोशन हो गई है, ऐसा कभी नहीं होता. वो फिक्स्ड लोकेशन पे. लेकिन इफ आई अप्लाई द फोर्स एट वन एंड ऑफ द डोर, इट इज गोइंग टू रोटेट. इट इज गोइंग टू रोटेट. नाउ इफ hinged supports are there, there are only, if I want to draw the FBD, there are only two forces, that is nothing but RV and RH. Now we will get the idea here. In a fixed support, opposite motion exists for a rotation, so that we have required to consider movement. But here, if I apply the force, they are not going to rotate. In this case, it is going to rotate, so that there is, here I am not going to consider movement. Here I am not going to consider a movement here. Clear? So the FBD of a hinged support is in this way. So three type of support we have seen. Three type of support. First support is roller support. Second one is the fixed support, and third one is the hinged supported beam. Clear? Any doubt related to this? Because if you not understand this FBD, कि रोलर सपोर्ट होने के बाद कितने रिएक्शन होंगे, फिक्स्ड सपोर्ट होने के बाद कितने रिएक्शन होंगे, ये समझ में नहीं आया तो शायद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आ जाएगी. मेनी टाइम्स दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन. ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि रोलर सपोर्ट को कितने रिएक्शंस होते हैं, फिक्स्ड सपोर्ट को कितने रिएक्शंस होते हैं, ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, एमसीक्यू में. सो यू शुड रिक्वायर टू नो दिस. आप ड्रॉ नहीं किया है तो ड्रॉ कर लीजिएगा ये. ओके. Now you can check it. Open the page number from 95. From 95 onwards, the beam related problems are started. 95 पेज नंबर से आगे बीम के प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं. Okay. Now before that, I will again another thing I will explain to you. Beam, actually there is a no, I can't make a classification here, but there is a 1-2 types of beams are there. That also I explain. So one beam is called as this type of beam structure is called as a cantilever beam. Cantilever beam.
or you can mention below types of beam or classification of beam. First one is the cantilever beam. कैंटिलीवर बीम के बाद लिख लीजिएगा कैंटिलीवर बीम एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. Cantilever beam. So write it down about this. The beam whose one end is fixed. Beam whose one end is fixed. Such type of a beam and a beam whose one end is fixed and another end is free. Such type of a beam is called as a cantilever beam. Second one, continuous beam. Continuous beam. So in this beam, second one is the continuous beam. So here it is supported by more than two support. If beam is supported by more than two supports, such types of a beam are called as continuous beam. It is a continuous, more than any type of a support, not a single support, not by only a simply supported. It may be a fixed support, it may be a possible a roller support, or it may be a possible hinged support. So continuous beam, it is supported by more than two. If it is supported by more than two, then such types of beam is called as a continuous beam. And third one is a overhanging beam. Overhanging beam. The overhanging word itself says that what is meant by overhanging beam. So if it is the further portion, somewhat portion of the beam is overhanged, such types of a beam is called as an overhanging beam. There we can make many classification of a beam, but many times they are going to ask the question on this only too. What is meant by cantilever beam and what is meant by overhanging beam and what is meant by continuous beam. Okay, so just we will write the three: cantilever beam, second one is the continuous beam, and third one is the overhanging beam. Okay, so we'll start the first problem of this. Open page number 95. Sorry. Before that, it is another very important thing is that types of loads, because without that it is not possible to complete the, or it is not possible to understand the concept. Last one is the types of load. Types of load. So write down this heading. So write down first is the uniform load. Uniform load. One end is of the beam is hinged, and suppose that another end is roller support. Any combination you can make. I don't have any issue related to this. If such type of a beam is there, what is meant by uniform load? If the load is uniformly distributed on the beam, uniformly distributed on the beam, and uniform load is represented in this way. And the unit is here 2 Newton per meter. And this distance is, suppose that any distance you can take, I will consider it is a 10 meter. So 2 Newton force is uniformly distributed throughout the beam. If the load is uniformly distributed on the beam, then such types of a load is called as an uniform load, or such types of a beam is called as a uniform loaded beam. Now here ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली इस एंड से इस एंड तक ही होना चाहिए. ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि ये सपोज दैट बीम है तो इतना ही पोर्शन उसका क्या होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा.
So in this much portion only the load is uniformly distributed. ऐसा तो possible नहीं कि continually beam complete beam ही uniformly distributed है, ऐसा possibility नहीं है। और कभी हो भी सकता है, ऐसा नहीं है। Suppose that in your room also you can check it, जिधर आप बैठे उधर सेकंड फ्लोर पे आप बैठे होंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा कि एक जगह पे ज्यादा लोड रहता है, दूसरी जगह पे दूसरे कॉर्नर पे कुछ भी लोड नहीं रहता है। अलमारी रखी है तो अलमारी का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट एरिया ओनली। जो अलमारी है वो अलमारी का जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दैट मच एरिया, बट रिमेनिंग अदर पोर्शन इज नॉट लोडेड, वो एम्प्टी ही रहेगा। तो ऐसा ही रहता है कि इट इज दिस मच पोर्शन इज यूनिफॉर्मली लोडेड एंड रिमेनिंग पोर्शन इज एम्प्टी। नाउ आई हैव टू ड्रॉ द एफबीडी ऑफ दिस। हाउ टू ड्रॉ? Here, this is a hinged support, so there are two reactions, RV, RH. This is roller support, so only one reaction. I will give the name for this, A point and B point, so that there will not be confusion. So this is a reaction at point B, RVA and RHA. RVA and RHA. This is the reaction produced by support, but this uniformly distributed load, that load we have required to convert into the point load, because up till now whatever the problems which we have solved, only we have seen a point load, एक ही जगह पे लोड डिस्ट्रीब्यूट था। ऐसा मे बी ये इंक्लाइन होगा, कैसा होगा ये हमसे ज्यादा उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक ही लोड था, यूनिफॉर्म एक ही पॉइंट पे कंसीडर किया था हमने। अभी तक ऐसा कभी हमारे पास इश्यू ही नहीं आया है कि ये जो फोर्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा कभी इश्यू नहीं हुआ था। सो व्हाट वी हैव रिक्वायर्ड टू डू हियर, वी हैव रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू पॉइंट लोड, uniformly distributed load into point load. Now how it is to be done? Very simple technique. Total load is a 2 Newton per meter. 2 Newton per meter. If I multiplied by distributed load, कितना है 10 meter. So meter get cancelled. So 20 Newton force is going to applied. ये uniformly distributed जो load है, वो uniformly distributed load we have converted into the point load. Simply I did 2 Newton per meter. If I multiplied by distance, how much distance? It is a 10 meter. So meter get cancelled. 10 into 20, 20 Newton. Now where is the location? ये point load हो गया, लेकिन किधर हमको locate करना पड़ेगा? So it is at total distance कितना है 10 है, so it is at B/2, उसके मिडल पे लोकेट करना पड़ेगा। So it is at 5 meter distance we have applied the 20 Newton force. So this is the FBD of this diagram. Again I am repeating this. Uniformly distributed load we have to convert it into the point load. For that purpose we have required to multiply by the distance, जितने लोकेशन पे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज वी हैव कन्वर्टेड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इनटू द पॉइंट लोड, बट वेयर टू लोकेट, बिकॉज दिस द पॉइंट लोड इज, सो वी हैव रिक्वायर्ड टू लोकेट दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज एट B/2, मींस टोटल डिस्टेंस कितना है 10 है, 10/2, सो इट इज 5 मीटर। 10/2 मतलब इधर 5 मीटर डिस्टेंस। So uniformly distributed load is located at B/2 or L/2. You can say it is L/2. B no, L/2 distance. Clear? So write it down below. Uniformly distributed load, it is also called as a UDL. Uniformly distributed load is also called as UDL. Uniformly distributed load is also called as a UDL. It is required to convert it into the point load. It is required
to convert it into the point load. So below write down load into distance. Load into distance. And below that write down location Ly2. And below that write it down location Ly2. Okay. Now in this way today we'll stop here. Remaining load type I will explain to you in next lecture. Okay, and so we will solve some numericals related to the beam in the next lecture also. हॅलो सर. हा बोला की. सर ते स्कोर का आला नाही काल? हा ते स्कोर आहेत आमच्याकडे, म्हणजे आमच्याकडे मिळाले ते, पण कसं आहे आता तुम्हाला डायरेक्ट बघू मी सर काय म्हणते. सीसीनला मी पाठवलंय. बर. तर सर काय म्हणतात बघून तुम्हाला देतो लगेच पाठवतो. कारण तिथं तशी कंडिशन आम्ही केली होती की तुम्हाला ते दिसून येईल. कारण ते काय होतंय कॉपी पेस्टचा इश्यू होतोय परत आम्हाला. कोणाला तरी एखाद्याला जर स्कोर कळाला ना ते लगेच दुसऱ्या मित्राला सांगतात. त्यामुळे तुम्हाला ह्या वेळेस इंटेन्शनली तसं केलं नव्हतं. ओके, अजून काय डाऊट कुणाला? सर थेअरी क्वेश्चन साठी नोट्स आहेत का? हा आहेत, पण अशा हँड रिटन नाहीत. पण जेवढे शक्य आहे तेवढं माझ्याकडे जे मटेरियल आहे ते मी तुम्हाला नक्की देतो. ओके सर. जास्त करून थेअरी मध्ये काय असं नाही, पण एमसीक्यू जेवढे बी एमसीक्यू आपल्या बुकलेट मध्ये आहेत ना ते एमसीक्यू आपण एक दिवशी घेणार आहे. म्हणजे सलग एक 2-4 दिवस ना फक्त एमसीक्यूच आपण घेणार आहे. आता पहिला सेक्शन संपला ना तर पहिल्या सेक्शनचे सगळे एमसीक्यू मी 2 दिवसात संपवणार आहे. सगळे A to Z एमसीक्यू. जेवढे बी एमसीक्यू आपल्या बुकलेट मध्ये आहेत तेवढे सगळे एमसीक्यू मी घेऊन ते कम्प्लीट करणार. आणि त्याच वेळेस त्याच्या करस्पॉन्डिंग थेअरी बी एक्सप्लेन करणार. जर का तुम्हाला समज म्हणजे त्या इथं ह्याच्या अगोदर काय समजलं नसेल तर त्या दिवशी मी तुम्हाला ते एक्सप्लेन करेन. थेरॉटिकल पार्ट. निकिता तुमचा आवाज क्लिअर नाही आला. हॅलो हा बोला. सर, तो मोमेंट ऑफ फोर्सचा क्वेश्चन नाही कळला, म्हणजे त्यातला थर्ड ऑप्शन समजलंच नाही. कुठला क्वेश्चन हो? कालच्या पेपर मधला? हा, मोमेंट ऑफ फोर्स थर्ड क्वेश्चन अंडरस्टँडच नाही झाला. एक मिनिट. थर्ड क्वेश्चन मुवमेंटचा कुठं होता? क्वेश्चन नाही सर, थर्ड movement of force. ऑप्शन. The movement of force is third the option. turning effect produced by force. This is also correct. Yes. Correct. Is a product of force and movement arm. That is also correct. Am I right? Is equal to twice the area of triangle. Let it be you don't read. About 2 options are exactly correct. Yes. Then all of the above is the correct answer. But sir, I can't understand third option. The movement, what is the movement? Force into turning effect तो वो प्रोड्यूस करता है, वो तो पक्का है. मूवमेंट से क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ही होता है ना. Yes sir. What is the movement? Force into movement arm, force into perpendicular distance. Movement Third arm option मतलब is sir. Third option she is asking sir. नहीं अबाव दोनों भी सही है, ऐसा नहीं है कि वो गलत है. Now third one is equal to twice the area of triangle whose base is the line representing force and whose, एक मिनट, whose vertex is the point about which the movement is taken. The third option is correct, so that the correct option is the fourth option. Clear? सर वो बता रही है कि सर एक्सप्लेन कीजिए शायद सर तीसरा ऑप्शन. Clear, simple. What is the movement? Force into perpendicular distance. That is the first definition. अभी दूसरा मूवमेंट का टर्निंग इफेक्ट भी होता है, ये भी बराबर है. अभी थर्ड ऑप्शन एक्सप्लेन, हाँ थर्ड ऑप्शन जो है ना वो तरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए. लेकिन मेरा जो थिंकिंग करने का तरीका क्या है कि ऊपर के दो बराबर है,
तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं दोनों को भी करेक्ट कर सकता हूँ। आउट ऑफ 4 यू आर रिक्वायर्ड टू चूज वन। Yes, And the sir, we हाँ, agree, हाँ, but सर third नॉलेज के is लिए बोल रहे सर। not getting one. That's why I'm asking. थर्ड वन आपको समझ में नहीं आया ना वो। हाँ, yes, sir. तो वो ट्रायंगल के रिलेटेड है। वो ट्रायंगल का जो मीनिंग है ना, क्या बोलते हैं कि इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज बेस इज द लाइन रिप्रेजेंटिंग दैट। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको ये मैं बताता हूँ कैसे वो आता है, वो मैं बताता हूँ। Okay, sir. एनी अदर क्वेश्चन यू आर नॉट अंडरस्टूड? सर वो पहले टेस्ट का सर वो क्वेश्चन। नहीं, वो मैं बता देता हूँ। उसमें मैंने वो नोटबुक नहीं लाया था मेरे पास। वो जो क्वेश्चन है ना, वो मैं उसमें था। वो मैं कल लेके आता हूँ, तो उस वक्त मैं बता दूंगा। Sir, I send you on WhatsApp, sir. Question. ओके ओके। वो क्वेश्चन मेरे पास नहीं है एक्चुअली। वो जो है ना, वो डायरेक्टली मैंने ये किया था। उसका सर आया कि सेक्स नहीं आ रहा सर। ठीक नहीं आ रहा है क्या? नहीं, वो नहीं करूंगा सर। मैं, आपको सॉल्व ही करके दे दूंगा। वो मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा है मेरे को वो। और मैंने जब पेपर अपलोड किया था ना, उस वक्त वो क्वेश्चन मैं भूल भी गया वो कौन सा क्वेश्चन है। तो मैं सर क्या हम करता हूँ, मैं आपको सर सेंड कर दूंगा फिर सर। हाँ, हमारे वो पास है। व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर लीजिएगा, मैं देख के कल कर Sir, दूंगा। hello, sir. I send you on WhatsApp, sir. 2-3 days ओके। ago. हाँ, आई विल अगेन चेक इट। Okay. ओके, विल स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू।